Hello everyone, I'm Dheeraj. Welcome to my YouTube channel. Okay, so in this session, I'm gonna talk about the 4 months strategy for GATE 2022, and you have to confine yourself. Your preparation should be confined, with your syllabus, right? So first of all, know your syllabus, right? So this session is going to be on syllabus of GATE examination, and I'm gonna be, particular for electronics and communication, right? So as you can see on the screen as well, this session belongs to the discussion of entire GATE syllabus, right? And how you have to plan for next 4 months, okay? And you have to dedicate last months for test series, right? In fact, you have to start test series from now onwards, okay? So you have to pick up the topic, right? Because the time is 5 months only. You can say if in 1 month 30 days are there, right? So we have only got 150 days, or you can say 4 months are there, so 120 days are there, right? So in 120 days you have to cover entire syllabus. If you want to get into IITs, if you want to get below 100 rank or single digit rank, we can say, right? So in this session, I'm gonna just highlight what are the important topics. Uh, most of the aspirant, where they mistake is they do not follow the syllabus. You need to be consistent with the syllabus. They just go, they prepare. Their preparation is completely random in nature. They just find out any question book, okay, and they start solving the questions. They don't know, in fact, what are the syllabus, what are the topic in the prescribed syllabus, okay, given by IIT, different IITs, right? In fact, this time IIT Kharagpur is conducting the examination, right? So you need to know your syllabus at first, right? So let's get into the syllabus and what is the importance of mathematics when you go for GATE examination, right? So, and what is the importance of mathematics when you are going for uh, any technical subject to prepare for, right? So now the syllabus is completely concise in nature. In old days, in we talk about in 2013 2014, the topic was not given in exclusive in nature. They have given any topic randomly, but they have also removed various topics which are not necessary, to be highlighted for in the GATE syllabus, right? So let us get into the exact syllabus, and you have to follow this strategy, for next 4 months, right? So let's get started discussion on the GATE syllabus, right? Okay, so this is going to be my favorite board, and as far as this session is concerned, this session is for electronics and communication, right? So as you can see, they have given the very first topic, know, uh, that is going to be engineering mathematics. Why they have given engineering mathematics? Actually, most of the aspirant, the mistake is they prepare maths before 7 days or 10 days of their main examination, right? Suppose the examination is to be held in the month of February 2022, so they start solving the question in the maths. They think that they are good in maths, right? In fact, they don't know what are the topic given in the mathematics syllabus in the GATE examination, right? So and you might have seen also in my lecture series, I sometimes I emphasize on certain important topics of mathematics, right? And as you can see, this syllabus is having two color, right? One is in red and one is in uh, black. So you have to see this red color topic is going to be the topic only, and the black color is subtopic basically, right? So you have to focus on topic first, and then in order to keep everything in mind, okay, things should be in sequence. If you are preparing for any competitive examination and your dream is to land into IITs and top NITs, okay, so as you can see, let me zoom this guy, okay, and the very first topic, hopefully everything is visible here. So the very first topic is going to be here, the linear algebra, right? Okay, let me zoom here first. Okay, the very first topic is going to be the very first, in fact, the very first subject is going to be the engineering mathematics, right? So in engineering mathematics, the topic is going to be linear algebra, and you can find this topic, this subject, okay, this topic in my playlist. You can go to the playlist in the hide series, okay, and you can find the linear algebra, and you will also find very interesting things
where I do emphasize, while discussing about linear algebra, you can see the very first topic they have given is the vector space. Most of the educators, they ignore vector space. They do not talk about basis. Recently I conducted the session on basis. What is the question on linear dependence and independence, right? So you need to know what is how we study linear algebra relating with the vector space, what is basis of any space, what is the concept of linear dependence and independence, right? Because these are the topic which would be useful in the real life application when you will go for higher studies in masters from IITs and ISC, or you will go for PhDs from abroad or in India, right? So these are the topic. Then you have to understand what is matrix algebra, and these are the important topics. And I'm also going to create conduct one session on eigenvalues and eigenvectors, right? You must know what is the difference between the vectors and the eigenvectors, and what kind of condition your vector qualifies, which are present in the vector space, right, to be called as eigenvectors, right? So you will find in the space the bunch of vector, the list of vector, and what are the vector to be qualified as eigenvectors, and which value is said to be the eigenvalues, right? So you need to know all these things, right? And what is the importance of rank of a matrix? Already I have told you what is rank of a matrix. तो मैंने आपको सेशन में बता ही दिया है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज बेसिकली the number of pivot variables, right? Pivot columns, right? So if you're going to use see, in linear algebra, all the time you will go for solution of linear system of linear equations, right? So how you can get the solution of system of linear equation? You have to always use the elimination process. Whether you talk about eigenvectors, whether you talk about eigenvalues, anything you talk about, whether you talk about linear dependence, independence, you have to take the help of Gauss elimination method. So you keep in mind, this is very important concept, Gauss elimination method, right? And already I have told you what is Gauss elimination method, how we eliminate it. Gauss elimination method. And if you apply elimination, if you invoke elimination into the matrix, your solution is not going to be changing, right? So rank of a matrix, then solution of linear equations, existence and uniqueness. Okay, suppose system of linear equations are given, right? And what are the condition where you will get the unique solution? What are the condition where you will get no solution? Or what are the condition where you will get infinitely many solutions, right? And you need to understand what is the meaning of non-trivial solution, what is the meaning of trivial solution, right? And what is the meaning of consistent solution, inconsistency, all these things, right? So in linear algebra, these are the important topics, right? And you need to recall your basic school math, right? So that if we are multiplying two matrices, you should not get stuck, right? So those are the things which you need to revise before you land in starting the discussion on linear algebra, or starting the topic called linear algebra, right? So you need to cover your, at least recapitulate your basic maths which you have studied in 11th 12th, right? Chalo. Next topic, which is very very important, in fact in all the universities which are top 10 universities in within top 100 university, you can say, they always talk about calculus, right? Calculus is one of the very important weapon, okay, to understand technology, to understand everything, okay, to understand real life situations, okay. So calculus is very very important. As you can see here, the mean value theorem is the very first topic, but in the calculus they did not mention about school math. Again I am talking about school math. So what comes in the school math? What kind of topic comes in the school math? What you have covered in 11th and 12th? See, if we talk about mean value theorem, okay, so if you're going to see the formal definition of mean value theorem, okay, or you can say Cauchy mean value theorem, Lagrange mean value theorem, you will find LMBTs, many extended version of Rolle's theorem we will talk about. So you will see the statement like any function is continuous in that interval, differentiable in that interval, right? In the open interval, in the closed interval, right?
So you need to know what is, how you can say any function is going to be continuous. So you have to revise limit of a function, continuity, okay, continuity and limit. These are the important topics which you need to revise before you get started calculus, right? And what is function, okay, all these, what is set, okay, all these things you need to revise, right? What is set and what is relation. So school math you can go back and check. In fact, I'm gonna create school math also. I'm gonna conduct session on one of my YouTube channel that is called Learn STEM YouTube channel, where we have got 1,000 of family, so you can refer that channel as well, right? So theorem of integral calculus, we will talk about various kind of theorems, right? In the integral calculus, we will talk about definite evaluation of definite and improper integrals. We'll talk about partial derivatives, maxima, minima. Okay, these are the important topics from where we can expect 100% one question from um, in the GATE examination. So these are the very important topics such as multiple integrals, where we will talk about line integral, surface integral, volume integral, right? So here we will talk about green theorems, right? Green theorems or divergence theorem, and all these things. So in calculus, you have to study these important topics. So what is the application of these topics, in your technical subject? So if you go for electromagnetic theory, where you will find line, surface, volume kind of integrals, okay, so you need to understand this. In fact, maxima and minima plays an important role everywhere. If you want to maximize anything, you need to go for, if you don't know what is the concept of maxima and minima, right? What do you do when you see the word maximum in the word problem, right? So you need to go for mathematical induction, right? You need to have the differentiation and then all those procedures which you follow, okay, so in order to find maximum and minima, right? So next topic is going to be differential equation, where we'll talk about ODE, the ODE, ordinary differential equation, the first order equation, linear and non-linear equations, okay. The higher order differential equation, you have to go for Cauchy's and Euler's equations, okay. So from there also you can expect one question like integrating fraction, they might ask, okay, or they might give you the Bernoulli equations, they might give you linear differential equations, okay. You must be understanding the variable separable method, in order to find the solution, all these things. The method of solutions, you have to also know the variation of parameters, right? This is also important. Then any differential equation has a solution of any differential equation has two part. One is complementary function, second one is particular integral. So CF and PI plays an important role. CF plus PI, complementary function and particular integral, and partial differential equations, okay, variable separable here. So any physical situation is given, how can you model the differential equations, right? How many constant will be there, okay, how many constant will be there, and what is the, what is the concept of degree and order? ये सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए, degree and order, how to identify, how to calculate, right? ये सब स्कूल मैथ्स से आप पढ़ सकते हैं, है ना? उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पर क्या है, पहले तो कैलकुलस में ही सारा ये सिलेबस दिया हुआ था, राइट? इन द कैलकुलस दे हैव they had combined everything like differential equations and vector analysis, vector calculus, everything. But now they have, they have just separated everything out so that we could experience less difficulty understanding these topics, okay. So they have organized in very great fashion, right? So you have to follow in this sequence, okay, so that you could so you have to start with calculus, then you go for differential equation, and once you are good at differential equation, then you can go for vector analysis, because in the vector analysis you will study different vector operators, such as vector in plane and space. So you will understand, you will uh, study about, gradient, curl, divergence, all these kind of a concept, right? So if vector operator is operating on vectors, so whether you are going to get vector or not, right? You're going to operate vector operator on a scalar, so what you going to get? So ये gradient, curl, divergence, इनका concept बहुत important है, okay? तो यहाँ पर आप देखेंगे divergence and curl, गॉस थ्योरम्स, ग्रीन्स एंड स्टोक थ्योरम, राइट? सो यहाँ पर आप सरफेस की बात करेंगे, क्लोज सरफेस,
ओपन सरफेस की बात करने वाले हैं, सिंपली कनेक्टेड कर्व, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हैं, राइट। सो क्लोज सरफेस क्या होता है, क्लोज कंटूर क्या होता है, और कहाँ पर हमारी ग्रीन थ्योरम फेल होती है, आपको ये भी समझना है, ठीक है। ग्रीन थ्योरम हमारी कहाँ पर फेल हो जाएगी बेसिकली, ओके। तो फेलियर कहाँ पर होता है, फेलियर, राइट, आपको ये सब जानना है ना। क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया, आपको यू आर कंफ्यूज दैट where to apply green theorem, where to apply Stokes theorem, where to apply divergence theorem, right? और आप क्या, where to calculate anything directly using line integral, surface integral, volume integral, right? तो आप जब एग्जाम देंगे ना, मेन एग्जाम, एंड विद इन 3 आवर्स आपके कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए कि आपको ये नहीं सोचना कि कहाँ पर क्या अप्लाई करना, आपको पता होना चाहिए कि जो वीकनेस है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट बोथ यू मस्ट नो, ओके। तो 4-5 महीने अभी बचे हैं, यू कैन फॉलो माई यूट्यूब चैनल वेयर आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, so that you could avoid mistakes, while giving the examination. So 3 hours is very important, in fact it can take 10 years, if you're not going to focus within 3 hours, right? So GATE examination is also all about 3 hours game, right? So it is all about 3 hours ball game, right? So despite you put lot of effort understanding topics, you might have seen in the YouTube channel where people, most of the educator, in fact most of the aspirant, they focus on problem solving only, right? They don't know what is closed surface, what is open surface. सर ने बता दिया कि क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करना है बस, लेकिन आपको अगर ये पता चल जाएगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द क्लोज सरफेस, व्हाट इज ओपन सरफेस, एंड वेयर ग्रीन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, तो इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है, राइट। दिस विल एनहांस योर एक्सपर्टीज, यू विल फील कॉन्फिडेंस योरसेल्फ, ओके। चलो, you might be confident, right? So next topic is going to be complex analysis, complex variable, where we will talk about analytic function, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। डेफिनेटली सीआईटी से एक क्वेश्चन आने वाला है, एंड सीआईएफ से भी आएगा आपका कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, राइट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका क्लोज कंटूर कैसा है, तो ओरिएंटेशन कैसा है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं बेसिकली, राइट। Then we will talk about sequence and series, convergent test, and there we will talk about sequence series, जैसे लॉरेंस सीरीज की बात करते हैं ना, टेलर सीरीज, लॉरेंस सीरीज, रेजिड्यू थ्योरम, तो रेजिड्यू थ्योरम की बात करेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जेट ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनफैक्ट अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे, जैसे अभी डेटा साइंस की बात होती है मार्केट में, एंड पीपल आर गोइंग फॉर डेटा साइंस, मास्टर्स इन डेटा साइंस, बीटेक इन डेटा साइंस, they are coming to study about artificial intelligence, machine learning, these kind of keywords you might be getting, right, to see, okay, at every seconds, right. So probability and statistics are very important, and if you want to understand the communication system, okay, uh, where you transmit messages from one point to another point, right, and during transmission, your noise gets added with the message signal, and at the receiver you are unable to decide what was sent exactly, right. So your message become completely random in nature, and you need to know about probabilistic model, how to model anything, right, probabilistically, right. You need to understand what is random variable, random process, all those things. तो इसमें आपको सबसे पहले जानना है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये सारी चीजें आप 12th में भी पढ़ते हैं, राइट, 11th-12th में पढ़ते हैं। एंड व्हाट इज combinatorial probability, right, and probability distribution, you will talk about binomial distribution। तो इनका एप्लीकेशन भी क्या होता है, जैसे हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मेन एप्लीकेशन क्या है, राइट, वेयर वी कैन यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 2014 में क्वेश्चन आया भी था, एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, कि एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी, रियल लाइफ एप्लीकेशन दिया हुआ था, एंड पूछा था कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन you will use in order to solve this kind of problem, right. So आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ कस्टमर, जैसे नंबर ऑफ कस्टमर, इफ वी टॉक अबाउट मोबाइल फोन एक्सचेंज, राइट, तो यहाँ पर क्या होता है कि एट द सेम टाइम नंबर ऑफ कस्टमर्स आर डायलिंग द नंबर, राइट। तो जो मेन मोबाइल स्टेशन है,
मोबाइल स्टेशन गेट्स कंफ्यूज विच वन टू ट्रांसफर फॉर द मेन कॉल, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ जो वो हैं, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ यू नो नंबर ऑफ इवेंट्स, और यू कैन से यहाँ पर कि जैसे n की बात करते हैं, राइट, ये ज़्यादा हो जाता है अगर नंबर n इज ग्रेटर देन, बहुत ही ज़्यादा है, राइट। तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू फॉर्मुलेट सक्सेस एंड फेलियर, राइट, सो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट इतने कॉल्स फेल हो जाएंगे, इतने कॉल सक्सेस हो जाएंगे, राइट, अगर आप डायल कर रहे हैं, राइट। तो आप बस तो डायल नहीं करते, एट द सेम टाइम इंटायर वर्ल्ड इज डायलिंग द सेम नंबर, राइट। तो आपको थोड़ा सा समझना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वहीं पर यूज होता है, राइट। और एक्सपोनेंशियल distribution, what is exponential distribution, right? So you need to understand normal distribution is very important, Gaussian distribution, right, क्योंकि आपका जो नॉइज है उसको हम लोग मॉडल करते हैं जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डेंसिटी फंक्शन, राइट। तो जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो आपको यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप बेसिक आपको पता है, समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे बेस थ्योरम से क्वेश्चन आ जाते हैं, बेस थ्योरम से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, राइट। तो आप यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। आप एक्सपेक्ट करेंगे क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी से, आप क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक आप बेस थ्योरम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आ जाते हैं 2 नंबर के, इस साल जैसे 2021 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। So if you are weak in this, so you can revise your IIT JEE syllabus. You can revise you can revise your school syllabus, right? And they at least expect these things, okay? Right. So as you can see, guys, this is the mathematics syllabus, and mathematics, these are the topic which would determine your understanding of the technical subjects. If you are zero in maths, and if you are following any lecture, right, you might find a hell lot of difficulty. So for the heck of understanding, you need to understand the engineering mathematics before you start talking about, start studying about any technical. तो ये जो मैथ्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, इसीलिए ये टॉपिक दिया हुआ है ना। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ से हटा भी दिए गए हैं, राइट। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं आपको समझना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे आपका ट्रांसफॉर्म थ्योरी है, राइट, सो ट्रांसफॉर्म थ्योरी भी आपको आना चाहिए, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट, रीजन ऑफ कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। तो ये सब आपको मैथ्स पहले से आना चाहिए, तो आपको रिवाइज करना है। तो अगर कोई भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आप इंपॉर्टेंट, तो आपको, जैसे आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो मेन रिसोर्स आपका जो है, व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन, आप मेन रिसोर्स आप क्या फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको जो PYQ है, क्योंकि PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अराउंड 32 ईयर्स ऑफ PYQ इज देयर, राइट। तो आफ्टर स्टडिंग वन कॉन्सेप्ट यू नीड टू रेफर PYQs, राइट। तो इससे आपको पता चलेगा कि यस यू आर एबल, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट, क्योंकि आप क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर पाएंगे, जैसे वर्ड प्रॉब्लम गिवन रहेगी ना, यू वुड बी एबल टू ट्रांसलेट कि अच्छा इसमें ये होगा, राइट। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप सर का रिकॉल कर रहे हैं कि सर ने इस तरह बताया था, राइट, कि जैसे कोई भी टॉपिक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन है, राइट, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको रीड करना है क्वेश्चन, राइट। आप किसी का सोल्यूशन मत देखिए, राइट, आप क्वेश्चन रीड करिए, आप समझिए, और आप ट्राई करिए कि उस क्वेश्चन को एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में डाल दीजिए, राइट। तो इंफॉर्मेशन जल्दी आ जाएगा, मतलब सारा इंफॉर्मेशन एक पिक्चर के फॉर्म में डाल दीजिए, फिर आप रिकॉल करिए कौन सा फॉर्मूला वहां पर अप्लाई करना है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए। तो बाउंड्री कंडीशंस, बहुत सारी चीजें जो आपको अपने माइंड में रखना है कि वीकनेस, ओके, कहाँ पर फेल हो रहा है, कहाँ क्या होगा, राइट, कहाँ पर हम कोई भी चीज लगा सकते हैं, राइट। ये सब, जैसे मान लीजिए आपका सीरीज है, वो कहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, तो रीजन कन्वर्जेंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप पढ़ते हैं, कोई फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, राइट, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। और बेसिक आपका मैथ, बेसिक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो बेसिक आपका एप्टीट्यूड पार्ट है, वो तो अच्छा होना चाहिए। इसीलिए 28/28 मार्क्स ऑब्टेन करना है, इट्स ओके। मैथ में 13 मार्क्स की मैथ आती है गेट में, राइट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट
द थिंग इज कि आपको अभी से पता होना चाहिए, राइट? व्हेन यू स्टार्ट गेट प्रिपरेशंस, योर मैथ मस्ट बी अमेजिंग। नहीं अच्छी है तो इट्स ओके, इट माइट टेक टाइम, बट 1 मंथ में आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, सबसे पहला काम। चलो अब बात करते हैं हम मेजर सब्जेक्ट की, ठीक है? तो हम मेजर सब्जेक्ट में आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे गाइस, ये मेजर सब्जेक्ट की बात करते हैं, राइट? तो पहला सब्जेक्ट क्या हमारा है? नेटवर्क एंड सिग्नल एंड सिस्टम, ठीक है? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा नेटवर्क, ओके, राइट। सबसे पहले यहाँ पर so I'm gonna talk regarding technical topic, right, in the next session, in the part 2, right? So this is going to be my part 1, okay? So you came to know what is the importance of maths and how you have to proceed, right? So पहले आपको क्या करना है? पहले आपको मैथ्स का टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, तो आपका मैथ कॉन्सेप्ट क्लियर। और जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अगर कहीं लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस की बात आती है, कि कहीं लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, बाउंड्री कंडीशन की बात आती है, तो आपको वहां पर ऐसा नहीं लगेगा दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर मी, राइट? तो आप इतना समझ जाइए, राइट? सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट 2, ओके? एंड थैंक यू सो मच।